Hi, dear students and fellow listeners. Hope that you all are feeling well. Today we will explore the facts about the entitled theme Operations in Operant Conditioning Theory. As we know that operant conditioning theory is propounded by one of the American behavioral psychologists, namely Skinner. Operation simply means the act or the activity which is performed by the organism. It means कोई भी learning possible नहीं है without the act, without performing any type of activity. Dear students, there are number of operations which are involved in the operant conditioning theory. Number 1. Operation of shaping. Dear students, operation of shaping is the primary operation involved in the operant conditioning theory given by American physician vis-a-vis the psychologist, namely B.F. Skinner. Now, what is shaping and how we will discuss the operation of shaping? Shaping simply means molding and modifying the behavior of an organism is known as shaping. यानी कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर मॉडिफाई और मोल्ड करते हैं तो उस प्रोसेस या मैकेनिज्म को कहते हैं शेपिंग. According to B.F. Skinner, shaping is not possible. It means we cannot mold or modify the behavior of any organism, चाहे वो कोई एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है. किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर हम मॉडिफाई मोल्ड नहीं कर सकते हैं विदाउट द reinforcement. It means with the help of reinforcement we can shape the behavior of an organism. Dear students, जैसे कि हम सब जानते हैं reinforcement is basically nothing. It is the environmental substance or event which help us to increase the rate of responses. Rate of responses cannot be generated or produced in the organism without using the reinforcers. It means अगर कोई organism response generate करता है तो उसके लिए ज़रूरी reinforcement या reward का होना है. Without the reward and reinforcement, the organism cannot generate the response. That is why shaping operation is incomplete without using the reinforcers, or I mean to say you reward. As the clay is molded and shaped by the potter in order to make the pots, जिस तरीके से एक पोटर मिट्टी को मोल्ड करता है ताकि वो डिफरेंट पोट्स बना सके, सेम इज द केस इन केस ऑफ शेपिंग. We shape the behavior of any untrained organism with the help of reinforcement. There is one of the process which is involved in the shaping. That process is known as successive approximation. Dear students, what is successive approximation? Successive approximation is that technique or that process which is involved in the shaping in order to shape or modify the behavior of any untrained organism. Dear students, successive approximation means when gradual change comes in the behavior of an organism. क्योंकि according to B.F. Skinner, change is not fast, it is gradual and systematic. यानी कि slowly and systematically
वी मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर मॉडिफाई फास्ट नहीं कर सकते हैं, इट टेक्स टाइम। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर ट्रेन करना है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, हम फास्ट उसके बिहेवियर में चेंज नहीं ला सकते, बिकॉज चेंज इज नॉट क्विक, इट इज बेस्ड ऑन द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, इट टेक्स टाइम। तो टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ, आहिस्ता आहिस्ता हम एक अनट्रेन्ड ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर चेंज करते हैं इन ऑर्डर टू लीड द ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ परफेक्शन। हम एब्रप्टली परफेक्शन नहीं ला सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम। अकॉर्डिंग टू सिकनर, द चेंज इज ग्रेजुअल and by and large it is systematic. So far as shaping mechanism is concerned, it means when we use the judicious reinforcers, we try to bring the change in the behavior of an individual or any other organism. For example, if we have to provide the toilet training to the child, तो किस तरीके से हम एक बच्चे का बिहेवियर ट्रेन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट द टॉयलेट ट्रेनिंग। जब हम फर्स्ट इंस्टेंस में बच्चे को टॉयलेट रूम में ले जाते हैं एंड वी पुट द चाइल्ड ऑन टू द स्टॉल एंड चाइल्ड फील्स स्ट्रेंज, आई मीन टू से यू गेट इज द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। जो एक छोटा बेबी होता है तो वो क्राई स्टार्ट करता है, बिगिन्स टू क्राई। नाउ द मदर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू मॉडिफाई एंड मोल्ड द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट, क्योंकि मदर जो है, शी इज द वन ऑफ द क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर हु इज क्लोजली कनेक्टेड विद द चाइल्ड, क्योंकि मदर को स्ट्रॉन्ग सोशलाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। Being as an strongest socializing agent, modifies and molded the behavior of untrained child. Our purpose is कि किस तरीके से हम एक छोटे बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो जो ही बच्चे ने वीप किया स्टॉल के ऊपर, तो मदर गिव्स द चॉकलेट और एनी टॉफी। तो चॉकलेट रीइंफोर्समेंट इस बच्चे के लिए बनता है, वो वीपिंग को बंद करता है, स्टॉप्स वीपिंग और क्राइंग एंड ट्राइज टू टेक द टेस्ट ऑफ चॉकलेट और टॉफी। एक तरफ वो चॉकलेट का टेस्ट करता है, दूसरी तरफ आराम के साथ वो यूरिन को पास करता है। तो नेक्स्ट टाइम द मदर वंस अगेन बच्चे को यूरिन करने के लिए टॉयलेट रूम में लाती है, तो सेकंड एक्सपीरियंस में भी बच्चा रोता है एंड द मदर गिव्स वंस अगेन सेम रिवार्ड एंड रीइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ एनी ईटेबल थिंग। तो यहां से वो रीइंफोर्समेंट की तरह लगता है और वहां से यूरिन जो है वो एलिमिनेट होता रहता है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट इन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, चेंज जो है ये स्लो है, ये ग्रेजुअल है, ये क्विक नहीं है, ये एब्रप्ट नहीं आती है। हम एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर या ह्यूमन चाइल्ड का बिहेवियर क्विकली चेंज नहीं कर सकते, बट इट टेक्स टाइम। तो समय गुजरने के साथ साथ बच्चा आहिस्ता आहिस्ता लर्न करता है किस तरीके से फ्लश का यूज किया जाता है, किस तरीके से वॉशरूम और टॉयलेट रूम का यूज किया जाता है। एंड व्हेन कंप्लीट चेंज टेक्स प्लेस, तो एक समय ऐसा भी आता है जब एक बच्चे के लिए चॉकलेट जरूरी नहीं होता है, रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो खुद वॉशरूम या टॉयलेट रूम में जाता है और उसे पता होता है किस तरीके से यूरिन पास किया जाता है, किस तरीके से जो वहाँ पर एपरेटस होते हैं वाटर का, फ्लश पॉइंट का, उन चीज़ों को किस तरीके से यूज किया जाता है। सो इट मीन्स हाउ वी विल इम्पार्ट द टॉयलेट ट्रेनिंग
to the child with the help of reward and reinforcement. This mechanism is known as shaping. I mean to say you, this is one of the major important operations of operant conditioning theory, which is known as operation of shaping. Now, this shaping operation, dear students, it is based on various principles. As we have earlier discussed, principle is nothing. These are actually the well-established laws or the rules which we have to follow. क्योंकि कोई भी learning possible नहीं है without following the rule or without following the law. So far as operant conditioning theory is concerned, its main operation is operation of shaping. जिस तरीके से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, shaping process is incomplete. I mean to say you, shaping operation is incomplete without the reward or reinforcement. So far as shaping operation is concerned, it is itself based on various principles. Number 1, principle of stimulus generalization. Dear students, the first principle which is involved in the shaping, that is known as principle of stimulus generalization. Stimulus generalization simply means the organism has ability to elicit the response, and same response is elicited by another similar stimulus. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में पोटेंशियल है कि वो स्टिमुलस के जरिए रेस्पॉन्स जनरेट कर ले, और हम सेम रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस या जनरेट कर सकते हैं नेक्स्ट सिमिलर स्टिमुली से. दैट प्रिंसिपल इज नोन एज स्टिमुलस जनरलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, टीचर वर्सेस स्टूडेंट. डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन, अगर हम एक टीचर और स्टूडेंट की बात लेंगे, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, बिकॉज टीचिंग इज द इंटरेक्शन between the teacher and the taught. Teacher tries to mold the behavior of the immature person, namely student or taught, in order to bring the complete perfection. Teacher uses various pedagogical techniques, various methods in order to lead the child towards holistic development. लेकिन स्टिमुलस जनरलाइजेशन में क्या होता है? What happens sometimes in the stimulus generalization, how the teacher, by using the various reinforcers like positive reinforcement भी एक टीचर इस्तेमाल कर सकता है, नेगेटिव reinforcement का भी इस्तेमाल करता है, पनिशमेंट का भी इस्तेमाल करता है, because main motive is to bring the change in the learner. अगर एक टीचर ने कभी एक लर्नर को पीटा है, that punishment which is given to the learner will produce definitely the fear among the learners or in the learner. क्योंकि सीधी सी बात है, जब एक टीचर ने बच्चे को पीटा तो उस बच्चे में फियर पैदा हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, अब इस टीचर के बाद नेक्स्ट टीचर क्लासरूम में आया तो जो बच्चा जो है उसमें फिर से फियर पैदा हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड विल रियलाइज एंड जनरलाइज, वो भी टीचर है, ये भी टीचर है, उस टीचर ने मुझे पीटा एंड ही इज ऑल्सो द टीचर, देयर इज चांसेस that he or she will also beat to me. So this process or principle is known as stimulus generalization. Dear students, another example I want to hear quote so that we will understand fully what stimulus generalization is. किस तरीके से एक स्टिमुलस से जब हम रेस्पॉन्स इलिसिट करते हैं तो वही रेस्पॉन्स जो है
वो हम अनदर सिमिलर स्टिमुली से करते हैं या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉग ने एक बच्चे को काटा। द डॉग हैज गिवन द बाइट टू द चाइल्ड। तो उस बच्चे में फियर डॉग का पैदा हो गया है, क्योंकि डॉग ने बच्चे को काटा है। अब कोई और डॉग आता है, चाहे वो डॉग सफेद रंग का है, काले रंग का है, भूरे रंग का है, लेकिन डॉग ही तो है। नाउ इन चाइल्ड फियर विल बी आल्सो प्रोड्यूस्ड। उस बच्चे में फियर पैदा हो जाएगा किसी दूसरे डॉग या एनिमल को देख के, क्योंकि वो जनरलाइज करेगा, क्योंकि सब कुत्ते काटते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलस जनरलाइजेशन। नंबर सेकंड, response generalization. Dear students, response generalization is different from the stimulus generalization. So far as response generalization is concerned, it simply means ability to produce or generate the responses with the help of reward or reinforcement. यानी कि reinforcement की वजह से, रिवॉर्ड की वजह से हम एक ऑर्गेनिज्म में रेस्पॉन्सेस प्रोड्यूस या जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्स जनरलाइजेशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हाउ रेस्पॉन्सेस आर जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ reinforcement. So far as response generalization is concerned, for example, as we know that B.F. Sickner ने एक्सपेरिमेंट रैट्स और पिजन्स पे किया। There was one of the experimental arrangement which was known as Sicknerian box. उस सिकनेरियन बॉक्स में B.F. सिकनर ने एक हंगरी रैट को रखा। डियर स्टूडेंट्स, एपिटाइट और हंगर मिटाने के लिए रैट को जरूरी था बॉक्स के अंदर लिवर को प्रेस करना। जब तक कि रैट रेस्पॉन्स नहीं देता लिवर को, तब तक फीडर मैकेनिज्म जो था वो एक्टिवेट नहीं होता था। तो इस तरीके से रैट का बिहेवियर ट्रेन किया गया था टू प्रेस द लिवर एंड गेट द रीइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड। रैट ने कंप्लीटली सीखा था हाउ टू प्रेस द लिवर एंड गेट द रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और उसकी एपिटाइट या हंगर जो थी वो सेटिस्फाई हो जाता था। Dear students, so here we can say that it is known as response generalization, क्योंकि जब एक रैट राइट डायरेक्शन में रेस्पॉन्स देता था तो उसे रिइंफोर्समेंट मिलता था। तो इसकी वजह से एक रैट ने कंप्लीटली सीखा that to give the response in right direction so that the rat or any other organism can get the reinforcement in the form of food. So this principle is known as response generalization. Number third, stimulus discrimination. Dear students, stimulus discrimination is the third principle which is involved in the operation of shaping. The organism has tendency to differentiate or discriminate between the two stimuli or stimulus and give the response to the correct one is known as stimulus discrimination. B.F. सिकनर ने इस तरीके से पिजन का बिहेवियर ट्रेन किया गया था। आई मीन टू से यू पिजन का बिहेवियर इस तरीके से मॉडिफाई और मोल्ड किया गया था। पिजन knows how to discriminate between the green light from the red light. पिजन ने कंप्लीटली सीखा था जब ग्रीन लाइट होती है तब मुझे फूड मिलता है, और जब रेड लाइट होती है तब मुझे फूड नहीं मिलता है। इस रेड लाइट और ग्रीन लाइट के दरमियान फर्क जानना, डिस्क्रिमिनेट करना,
how green light is different from red light. Such a behavior has learned by the pigeon as an organism. So here we can say that principle of discrimination simply means when the organism has tendency to discriminate or difference between two things, two stimulus, and give the correct response to right one. The process or principle is known as principle of discrimination. Discrimination is based on सिग्नल और क्यूइंग, यानी कि क्यू जब एक ऑर्गेनिज्म को मिलती है तो क्यू की बुनियाद पे या सिग्नल के बुनियाद पे एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंशिएट और डिस्क्रिमिनेट कर पाता है. डियर स्टूडेंट्स, किस तरीके से हम क्यू और सिग्नल का कंसेप्ट समझ सकते हैं? हाउ क्यू एंड सिग्नल वर्क्स इन द डिस्क्रिमिनेशन, हाउ इट हेल्प्स टू द ऑर्गेनिज्म to differentiate between the two things and accordingly generate or produce the response. So far as operant conditioning theory is concerned, on the basis of cue or signal, the organism is able to make a differentiation. The organism is able to difference between the two stimulus and give the response accordingly. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, द इंडिविजुअल हु इज फीलिंग वेरी मच हॉट, जिसे शदीद किस्म की गर्मी महसूस होती है, वो इंडिविजुअल रूम में बैठा है, लेकिन रूम में फैन भी है और बल्ब्स भी है, लेकिन बल्ब्स जो है वो स्विचड ऑफ मोड में है. नाउ अब पंखा चलाने के लिए इंडिविजुअल को खड़ा होना है कि फिर स्विच ऑन करने हैं बोर्ड के, और उसे पता चल जाएगा कि बिजली है कि नहीं. सो फार एज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज कंसर्न, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बिलीव्स, वो बैठ के भी उसे पता चलता है कि बिजली है कि नहीं है, उसे खड़ा होने की जरूरत नहीं है. द इंडिविजुअल कैन कन्फर्म वेयर द इंडिविजुअल इज सीटिंग, कि whether there is electricity or not, how and which thing becomes their signal or cue. Dear students, keep it in the mind, बोर्ड में always indicator लगा होता है. Dear students, बोर्ड में इंडिकेटर लगा होता है, तो वो इंडिकेटर की लाइट जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए क्यू और सिग्नल का काम करती है. अगर इंडिकेटर में लाइट जलती है, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज, एंड दैट इंडिकेटर वर्क्स एज ए क्यू आर सिग्नल. तो ये खड़ा हो जाएगा तो स्विच ऑन करेगा, फैन रोटेट हो जाएगा या फंक्शन स्टार्ट करेगा, एंड द पर्सन विल गेट द कूल ब्रीजेस ऑफ एयर. अगर इंडिकेटर की लाइट नहीं जलती है, इट ऑल्सो वर्क्स एज ए क्यू, तो उसे पता चल जाएगा कि इस वक्त बिजली नहीं है, आई हैव टू वेट till the electricity will come, and accordingly I will operate the buttons of the board and get the cool breezes from the fan. So this is known as principle of discrimination. How on the basis of cue or signal we try to difference between the two things, and accordingly we are giving the responses. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अब एजुकेशनल प्रिज्म से देखेंगे, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू मेक द चिल्ड्रन और लर्नर्स फेमिलियर हाउ टू मेक ए डिस्क्रिमिनेशन, हाउ टू मेक ए डिफरेंसेस बिटवीन द टू कंसेप्ट्स और टू थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को हम फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट देते हैं. एप्पल भी फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, एंड ऑरेंज भी फ्रूट है. ये सब फ्रूट्स है, तीनों के तीनों फ्रूट्स है, बड़े ये तीनों फ्रूट्स है, बट देयर लाइज द डिफरेंसेस. हाउ एप्पल इज डिफरेंट फ्रॉम द मैंगो, हाउ मैंगो इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑरेंज. तो इस तरीके की नॉलेज हमें बच्चों को देनी है, सो दैट द चिल्ड्रन विल कंप्लीटली लर्न हाउ टू फाइंड द डिफरेंसेस among the
सिमिलर थिंग्स, किस तरीके से वो डिफरेंट फ्रूट्स में फर्क जानेंगे, किस तरीके से बच्चा लर्न कर पाएगा डिफरेंट ट्रीज और प्लांट्स में फर्क जानने की, डिफरेंट एनिमल्स में फर्क करने की. एंड दीज थिंग्स should be learned by the student or taught to the learner how to make a differences from one thing to the another thing. Number 4, habit competition. Correct habit must attain the dominance over the competing habits is known as habit competition. Dear students, as we know that habit is something which is regularly or consistently repeated by the organism is called as habit. For example, someone who used to go for the morning walk regularly, consistently, and daily. So we can say that he is the or she is the habitual of morning walk. कोई म्यूजिक हर दिन सुनता है, हर घड़ी सुनता है, तो हम कहेंगे उसे द पर्सन इज हैबिचुअल ऑफ लिसनिंग म्यूजिक. कोई पर्सन जो है वो चेन स्मोकर है, हर वक्त वो सिगरेट पीता है. इट मीन्स वी कैन से दैट ही इज द और शी इज द हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग. सो दिस इज सिंपली द हैबिट. नाउ व्हाट इज हैबिट कंपटीशन? हैबिट कंपटीशन में क्या होता है कि वन हैबिट attains the dominance over the competing habits is called as habit competition. B.F. सिकनर ने ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर एग्जामिन किया और ऑब्जर्व किया. जब एक ऑर्गेनिज्म राइट डायरेक्शन में रेस्पॉन्स देता था तो B.F. सिकनर उस वक्त उसे रीइंफोर्समेंट देता था. If the organism will not give the correct response in right direction, तो reinforcement या रिवार्ड जो होता था वो withhold किया जाता था. The organism was not getting the reward or reinforcement. But once the organism gives response in right direction, the organism gets the reward or reinforcement. तो कबूतर का बिहेवियर ट्रेन किया गया था. जब भी कबूतर पिजन रेस्पॉन्स देता था राइट डायरेक्शन में तो फीडर मैकेनिज्म के जरिए पिजन को रिवार्ड मिलता था इन द फॉर्म ऑफ फूड पैलेट. तो जो दूसरा रेस्पॉन्स होता था पिजन का वो क्विक होता था एंड गेट्स द रिवार्ड एंड रीइंफोर्समेंट वंस अगेन. तो पिजन का जो तीसरा रेस्पॉन्स होता था वो ज्यादा क्विक होता था इन ऑर्डर टू गेट द सेम रीइंफोर्समेंट. तो जो चौथा रेस्पॉन्स होता था वो उससे भी क्विक होता था क्योंकि हर एक रेस्पॉन्स पे ऑर्गेनिज्म आई मीन टू से पिजन एक्सपेक्ट करता था कि मुझे रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट मिलता है और उसे सेम राइट डायरेक्शन वो फॉलो करता था. सो वी कैन से दैट वन रेस्पॉन्स गिव्स बर्थ टू द अनदर रेस्पॉन्स एंड देयर वाज आई मीन टू से क्विकनेस इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्सेस generating of the responses, and this principle is known as habit competition. Number 5, chaining. Dear students, chaining is the last principle involved in the operation of shaping. Now what is chaining? Chaining simply means the set or units connected to each other in the form of chain is called chaining. Dear students, in chaining, the task is almostly splitted or bifurcated into small steps. एक टास्क को हम स्मॉलर और सिंपलर स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं चेनिंग. Usually what happens in the chaining? Dear students, इन केस ऑफ चेनिंग, चाहे वो वर्बल चेनिंग होगी चाहे वो मोटर चेनिंग होगी, दोनों चेन्स में यानी कि चेन मेंटेन रहनी चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, मोटर चेनिंग में बेस्ट एग्जांपल है आई मीन टू से यू
व्हीकल की, किस तरीके से आप गाड़ी को चला सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू फर्स्टली ओपन द लॉक ऑफ डोर, फिर एक ड्राइवर को सीट पकड़नी है, सीट बेल्ट बांधना है, एंड देन आफ्टर अकॉर्डिंगली कि जो की है वो इंसर्ट होल में करनी है in order to start the car, then accordingly change the gear system and also use the accelerator, and moreover by and large we can say that how to use the brake and other necessary steps। तो ये सब मैकेनिज्म अगर एक ड्राइवर फॉलो नहीं कर सकता है then vehicle cannot move, then vehicle cannot bring into the motion, तो हम गाड़ी को नहीं निकाल सकते है। सेम इज द केस इन केस ऑफ वर्बल चेनिंग। अगर हमें वर्बल चेनिंग का कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉकिंग ऑन टू द रोड, आप रोड से जा रहे हो, बीच रोड में आपको एक फ्रेंड मिला, तो वहां पर आप वर्बल चेनिंग मेंटेन कर लेते हो, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। नाउ गुड मॉर्निंग और टू से गुड इवनिंग, it does not mean one friend is greeting to the another friend. Actually, motive is how one response gives birth to the next response. तो पहला रेस्पॉन्स गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग की सूरत में था, तो इसने नेक्स्ट रेस्पॉन्स को जन्म दिया, सेम टू यू। अब दूसरा जो रेस्पॉन्स है वो तीसरे रेस्पॉन्स को जन्म देगा, हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो ये चौथे रेस्पॉन्स को जन्म देगा, आई एम फाइन। तो ये पांचवें रेस्पॉन्स को जन्म देगा, व्हाट अबाउट यू, आई एम ऑल्सो फाइन। एंड इस तरीके से सीरीज ऑफ रेस्पॉन्सेस चेन में निकल जाएंगे। इट मीन्स फर्दर रेस्पॉन्स विल अकर इन द फॉर्म ऑफ चेन, दिस इज नोन एज वर्बल चेनिंग। लाइक रेस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं, वेयर यू आर गोइंग, for what purpose you are going to Srinagar, what you have to fetch there, what about you, where you are going. So like that, in the form of chain, number of responses can be generated. So this is known as verbal chaining. These were the various principles of shaping, and shaping is the one of the primary, I mean to say you, operation involved in the operant conditioning theory. Dear students, in next lecture we will focus on another operation that is known as operation of extinction.